शुरू ही कर देना है ना मुझे। हेलो। हाँ जी, सो वेरी वेरी गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। सो टुडे और आज हम ये काली का हेलो हेलो। हाँ जी, सो वेरी वेरी गुड इवनिंग। सो आज हम काली का ट्राई करेंगे अंडरस्टैंड करने के लिए कि what exactly this medicine is homeopathy. So let's try to understand this with one particular small case. So this is a very uh, typical case for Kalika, I can say. It's not there is technical issues. So this is the case of a Victons. Now what is Victons if I say? अगर आपको पता हो तो वो एक आई फ्लूटर्स की तरह होता है कि अगर आप देखोगे तो आपकी आईज के सामने वो आएंगे और इट्स लाइक दे आर लाइक सेमी ट्रांसपेरेंट इन नेचर। तो वो क्या हो गया कि स्टॉप में ओके। सो ये जो फिफ्टोन्स जो होते हैं ये आपकी आईज के सामने आते जाते रहते हैं। इट्स लाइक सेमी ट्रांसपेरेंट इन नेचर। वो जब आप ऊपर से नीचे की साइड पे देखोगे, नीचे से ऊपर की साइड पे देखोगे तो वो आते जाते रहते हैं। और ये देयर इज नो स्पेसिफिक पैथोलॉजी बिकॉज फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, or it could be because of some age related issues, or could be some related some issues with the retina. And in allopathy the only available treatment is they advise laser treatment because of these symptoms. So जब मैंने ये जो पर्सन है ही इज अ मेल, सो मैंने उनको पूछा कि ये एग्जैक्टली इसकी वजह से आपको टेंशन क्या होता है, बिकॉज इट इज वेरी weird thing, very small, very trivial thing I can say. हम सभी को अगर हम देखना चाहेंगे तो हमारी आंख के सामने फ्लिप्टॉन्स देखते ही रहते हैं। ऐसा नहीं कि ये किसी को नहीं होता है। इफ यू ट्राई टू सी इट यू विल सी इवन राइट नाउ आई कैन से। तो मैंने उनको पूछा कि एग्जैक्टली क्या होता है, तो उन्होंने बोला कि इसकी वजह से मुझे इतना टेंशन हो जाता है कि मैं इसकी वजह से ब्लाइंड ना हो जाऊं। तो और उसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा टेंशन भी रहता है और हेडेक भी रहता है। तो जब मैंने उनको पूछा कि ये सभी में सबसे ज्यादा आपको प्रॉब्लम क्या करती है, तो मेरे जो आई प्रॉब्लम है वो मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है। और उसकी वजह से ही जस्ट थिंक कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट हिज प्रॉब्लम। वो ऐसा सोच रहे थे कि अगर मुझे कुछ होगा या फिर मुझे कुछ ऑपरेट करवाना पड़ा तो आई फील सो मच सो कि क्या होगा मेरा। he becomes so much so anxious, and because of this thing he was in a constant depression। और वो उसकी वजह से नींद भी नहीं
प्रॉपर ले पा रहे थे, और ये प्रॉब्लम की वजह से वो जॉब पे कंसंट्रेशन भी नहीं कर पा रहे थे। एंड ही आल्सो हैविंग दिस फियर ऑफ कैंसर एंड फियर ऑफ लूजिंग वेट, कि अरे वेट मेरा बहुत कम हो रहा है, तो कोई मुझे हर बार कोई मुझे देखता है तो कोई बोलता है, करे आपका वेट तो बहुत कम हो गया है, आपको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना। सो दैट इज व्हाट दे आर सेइंग बेसिकली। और उसकी वजह से मैंने उनको पूछा कि क्या सबसे ज्यादा वर्स्ट क्या इश्यू है, जस्ट राइट। सॉरी, बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इश्यूज ये सब हो रहा है। हाँ जी, सो जैसे मैं आपको बताया कि उनको कंटिन्यू ये टेंशन रहता है, आई एम द ओनली सन इन माय फैमिली। तो अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे पेरेंट्स के कौन देखभाल करेगा, कौन उनको संभालेगा। तो उनको ये बहुत ज्यादा टेंशन हो रहा है कि अगर मुझे कुछ होगा या फिर मेरी आइस को कुछ होगा, तो एज माय पेरेंट्स, माय फैमिली मेंबर्स, माय वाइफ, all are totally dependent on me to do the various routine things. तो अगर ये ऐसा कुछ होगा तो क्या होगा आगे जाके, and he is continuously like thinking about all these things, कि अरे मैं ब्लाइंड हो जाऊंगा तो क्या होगा, और मेरी जो फैमिली मेंबर जो है, दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन मी। सो वो कंटिन्यू ये सोच रहा था। और ऐसा जब मैंने उनको पूछा कि व्हाट कुड बी द वर्स्ट सिचुएशन, कि वर्स्ट क्या हो सकता है, तो उन्होंने बोला कि अगर मुझे कुछ हो गया तो आई एम द ओनली अर्निंग मेंबर इन द सोसाइटी, और अगर मैं ही नहीं रहूंगा तो इवन सोसाइटी में भी कोई उनको हेल्प नहीं करेगा। तो मेरे बिना मेरे फैमिली मेंबर्स कैसे सरवाइव करेंगे। तो ये उनके माइंड में कंटिन्यू चल रहा था कि वो भी कैपेबल नहीं है, और मेरे जो वाइफ जो है उनको भी बाहर का ऐसा कुछ नहीं आता है, तो वो अपनी लाइफ आगे जाके कैसे वो हैंडल करेगी। यू जस्ट इमेजिन, जो प्रॉब्लम जो है पेशेंट का वो बहुत ट्रिवियल, फ्लूक्टॉन्स, जैसे मैंने आपको बताया कि हम सभी को दिखता है फ्लूक्टॉन्स मेरे आइज के सामने, but we are no one can this very trivial problem, but because of his state he was continue in a so much so anxiety state, and at that time he feels so much so helpless in nature. He feels that I at that time I really want some support, बट मुझे नहीं लग रहा है कि कोई मुझे सपोर्ट करेगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस तरह से तो नहीं जी पाऊंगा, कि इफ आई बिकम ब्लाइंड, दैट इज व्हाट ही वाज थिंकिंग।
his worst situation in life. So उसकी वजह से उसको लगा कि it's like this is the end of my life. जब मैंने उनको पूछा कि okay, what dreams you are getting, surprisingly the dreams he was constantly getting is free dream of losing one's own eyes. And that और जो उनका सबसे worst imaginator जो fear जो था वही उनको बार बार ड्रीम में आ रहा कि मेरी आंख चली गई तो जो मेरी फैमिली है वो पूरी डिपेंडेंट है, और अगर मुझे कुछ हो गया, मैं मर गया, तो मेरी फैमिली कैसे सरवाइव करेगी. You just imagine the kind of a person. तो मैंने उनको पूछा कि हाउ वुड बी दिस सिचुएशन, कि ये सिचुएशन कैसी रहेगी आपके फैमिली मेंबर्स के लिए. तो उन्होंने बोला कि अब वो लोग भी क्या करेंगे, उनको भी एक्सेप्ट करना होगा ये सिचुएशन को, उनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है. सो दिस इज व्हाट द स्टेट ऑफ द काली काब आई कैन से. अगर हम यहाँ देखें कि मेन क्या इश्यूज आ रहे हैं, तो one very big issue in this particular case is anticipatory anxiety about one's health. And my family is totally dependent on me, and without me वो लोग कैसे survive करेंगे. और ये situation में मुझे इतना helpless लग रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि there is no way to come out. मैं इसमें से बाहर तो कैसे निकल पाऊंगा. So ये सभी ये केस के मेन इश्यूज है. और जैसे मैंने आपको बताया कि ये पूरा कंप्लीट काली काब का स्टेट है. So that's why I have given him Kali Kaab 1M as a medicine. So let's try to understand कि Kali Kaab exactly क्या है. So Kali Kaab is a medicine from the minerals, or it's a carbonate of potash, and it belongs to column 1. अगर आप यहाँ देखना चाहोगे तो ये रो 4 में कॉलम 1 में आ रही है काली, एंड कार्बन रो 2 में कॉलम 10 में आ रही है कार्ब. तो यहाँ आपको काली और कार्बन दोनों के जो मेन जो इश्यूज है ये यहाँ आपको देखेंगे. कार्बन हैज टू डू विद vital fear, whether they are capable or not, whether I will be remain on my own or not. और जो रो 4 में कॉलम 1 जो है, रो 4 has this calcium line, has to do with family, has to do with protection, has to do with financial soundness. And Kali is here in the column 1, which is very much clingy in nature, very much I can say panicky line. This whole column 1, right from the lithium to sodium to Kali, all are very much clingy in nature, and all are also very much panicky in nature. So it's like the place of the Kali, if I say, it's like the main theme of Kali Kaab is the how will I react, or how will I survive without the person or without my family to whom I am completely dependent. And because of these things, they are constantly in a anxiety mode. Constantly they are thinking and brooding and thinking and brooding. And basically it's a psychotic medicine. So they try to avoid the things as far as possible. So here the main symptom of Kali Kaab is they having this fear of being alone and constantly desire for company. So उनको ये अकेले रहने का डर बहुत होता है, और उसकी वजह से they are so much so anxious in nature. They would never be remain alone without the family or without the group to whom they are so much so dependent. And here we see anxiety everywhere. For example, frightened from trifles, fear of being alone. ये सभी काली काब के रूब्रिक्स है.
They feel startled from fright, startled from noise, startled from touch. It's like it's very suddenly. They are having a dream of ghosts and of fears, dreams of robbers. They are also having a dreams of frightful figures. So you can imagine a person who is so much so sensitive, so much so frightened by traffic, and so much so dependent on their family, or they feel that my family is completely dependent on me. So without me, how my family will survive, and without family, how I will survive. So that is what the state of the Kalika is. So they constantly desire for the caring. They always seek for the aid, for the help. And पर जब हम किसी पे इतना बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं, very much clingy in nature. So, but natural है when we are so much so dependent on one person or on the family, automatically disappointments will be there. और उसकी वजह से वो पर्सन को लगेगा कि on the person to whom they are so much so dependent, they always disappoint them. They never support me. So that's why they are always quarrelsome and nagging with the person or with the family to whom they are completely dependent. Am I able to convey the Kalika? So एक साइड पे ऐसा होता है कि वो पूरा टोटली डिपेंडेंट रहता है, पूरा क्लिंग होता है फैमिली पे या फिर वो पर्सन पे टू whom they are so much so dependent, और उसी पर्सन से वो कंटिन्यू लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं. Even I can say many patients who are Kalikab in nature, Kalikab in a state, they are also so much so dependent on us as a doctor. So one side they are also so much so dependent on us, but other side they always have this feeling that whenever I need, you are not there as a doctor. That is what their basic state is. To whom you are completely dependent, अब जिस पे हो, अब वही आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है. And always and that's why there is a rubric that ki quarrelsome and always a fight with bread and butter. ये और other rubrics है कालिका आपके anxiety when alone, complete desire when alone, discontented as on everything. As I told you, कि as they are so much so dependent, they feel so much so discontented with everything. As we have already discussed, they are thinking for it, they are startling from fright. They are so much so sensitive. They weep when telling about their sickness. और इसके साथ कालिका की एफिनिटी किसकी कौन कौन से ऑर्गन पे है, ये भी एक समझना बहुत जरूरी है कि along with this mental state, the main affinities for the kalika are muscles, ligaments, serous and mucous membranes, heart, uterus, lumbar region. So Kalika is known for a remedy for the backache with weakness, with profuse perspiration. ये कालिका का ट्रायो है, backache with weakness with perspiration. And as we know already, Kalika is again very good medicine for pneumonia. Specifically, जैसे यहाँ लिखा है कि chest affinity है कालिका की, स्पेसिफिकली राइट लोअर रीजन. तो वहां आप अस्कल्टेट करोगे तो यू विल फाइंड wheezing sound will be there, crepitations will be there because of so much of cough production during pneumonia stage, or even at the time of asthma you will find wheezing in that particular area. कालिका की जॉइंट्स पे भी बहुत अच्छी एफिनिटी है और आईज और ब्लड पे भी एफिनिटी है. अगर हम मॉडलिटीज की अगर हम बात करें तो कालिका हैज अ वर्स्ट aggravation from cold air, cold water, draft of air, overheating and overexertion.
regarding the time modality, 2 to 3 a.m. aggravation. So this is the very specific time where the Kalika person has a asthma problem or severe coughing will be there in the midnight. And at that time वो सो नहीं पाएंगे. अगर लेफ्ट साइड पे पेन है तो लेफ्ट साइड पे नहीं सो पाएंगे, या फिर जिस साइड पे पेन हो उस साइड पे वो सो नहीं पाएंगे. As we all already know कि Kalika is a very chilly remedy. We find winter aggravation here, specifically midnight winter aggravation, which is quite common time for the cardiac problems, if you know, for the asthma. तो just ये medicine आप ध्यान में रखिए. And the Kalika person feel better by warmth, as the person is very chilly in nature, वो उसको warmth से better रहेगा. And by sitting elbow on the knee ऐसे करके अगर वो बैठेगा तो उससे उसको काफी रिलीफ मिलती है. ओपन एयर से भी कालिका आपको बहुत अच्छा लगता है. So you just imagine the whole picture of the Kalika. कि कालिका कैसा होगा. वन साइड पे वो बहुत पैनिकी है, बहुत क्लिंगी है, बहुत एंग्सियस है, so much so anticipation है, and he feels that कि अरे मुझे कुछ होगा तो मेरे फैमिली को क्या होगा, मेरे फैमिली को क्या कुछ होगा तो मेरा क्या होगा. And along with this thing, all this pathology regarding the uterus or asthma or the pneumonia or some cardiac problems or some mucous membrane or serous membrane or eyes specifically in this case. So these are the main affinities for the Kalika. In the Kant's lecture, he has given all these specific symptoms for the Kalika: the vertigo from the hunger, perspiration from the upper lip, perspiration in the external throat, as we have already discussed, respiration difficult, asthmatic attack at 3 a.m. at midnight. Kalika person also has this painful breast membrane before periods. From the Fatak, we have this very famous symptom of Kalika, never since well pneumonia. Kalika is वो बहुत मेन रेमेडी है. वर्किंग विद द फिंगर्स यूजिंग एग्रेवेशन. जैसा हमने देखा है कालिका बहुत सेंसिटिव पेशेंट है. नॉट ओनली एट सिर्फ मानसिक तौर पे नहीं, बट शारीरिक तौर पे भी बहुत एक वीक, बहुत डेलिकेट पर्सन होता है. बहुत क्लिंगी होता है. ही ऑलवेज वांट समवन जो उसकी केयर कर पाए. So that's why always there is a shrinking for aid. तो ये सभी की वजह से अब वो थोड़ा ही कुछ काम करेगा और उसको प्रॉब्लम हो जाता है. We also find here another physical symptoms, which is the soul are very painful in nature. So more or less, this is the short description I can say regarding the Kalika. The one medicine which I would like to have a differential diagnosis with Kalika in the minerals would be calcarea carb. So अगर आप देखोगे calcarea carb और काली carb, तो calcarea carb कॉलम 2 में है और रो 4 में है, और काली carb जो है वो कॉलम 1 में है और रो 4 में है. So if you need to differentiate between Kali Carb and Calcarea Carb, Kali Carb is belongs to as रो कॉलम 1 की है, तो वो बहुत पैनिकी है, एक्टिवली पैनिकी है, so much so clingy in nature. Kalika persons, while Calcarea are they also want support. को भी support तो चाहिए, but in difficult situations they want support. While Kalika want support at each and every time. So ये दोनों का differentiation है कि Calcarea is little bit more developed compared to Kali.
कलकरिया को लगेगा कि अरे अगर मुझे कुछ बीच में प्रॉब्लम हो गया, कुछ डिफिकल्टीज आ गई, तो उस टाइम पे मुझे कोई चाहिए जो मुझे सपोर्ट करे, जो मुझे गाइड करे. And Calcarea usually are more passive in character, not so much so reactive like Kalika, while the Kalika are more reactive in nature. They are so much so clingy in nature. They are so much so panicky in nature. So that's why even in psychiatry, I can say panic anxiety. Kalika could be the most common medicine which we are using in homeopathy, I can say. Even for the various phobias, काली का बहुत frequently use हो ऐसी medicine, along with when you find all these physical symptoms and with these modalities. So this is it from my side. अगर कुछ भी आपको queries हो, कुछ भी issues हो, तो you can contact me or you can contact the other song. And मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा Hope or other song academic to give me this opportunity to share my views on Kalika. Okay, so thank you.